In the last lecture, we are studying induction motor. Torque equation we have derived. 3 upon 2 pi ns by 60 SE2 square R2 by R2 square plus SX2 square. Okay? This is the torque equation which we have derived in the last lecture. This equation is very important. Entire analysis of three-phase induction motor is based on this torque. Okay, right? T is equal to 3 upon 2 pi ns. 2 pi ns is nothing but omega s. Okay, into SE2 square R2. E2 square R2 by R2 square plus SX2 square. Okay. R2 is the resistance of rotor winding. X2 is the leakage reactance of rotor winding at standstill condition. And S is the slip. S is the slip. Right? So this is the equation which we have already derived. And we have studied the characteristics also. Torque speed characteristics or torque slip characteristics. I call it this as torque speed characteristics, or I call it as torque slip characteristics, oblique slip. In the same axis, I am taking both the axes. Speed is varying from 0 to ns and slip is varying from 1 to 0. This concept should be clear always. His speed is varying from 0 to ns and slip is varying from 1 to 0. Okay. And the characteristics which we obtained for a three-phase induction motor in the last class, what we derived, it is what we obtained or what I had explained in the last class is, initially the torque is inversely proportional to 1 by s, then it is going maximum value, and then finally it is becomes directly proportional. Finally it is directly proportional to s. Sorry, here slip is 0. Therefore, this is a straight line passing through origin is 0 slip axis. Or you can say we are plotting torque slip characteristics. Okay? Instead of plotting torque speed characteristics, we are plotting torque slip characteristics. This point is starting torque. And this point is called as point of maximum torque. TM. So in case of three-phase induction motor, your torque increases slowly and reaching the maximum value and then decreases. As the speed is 0, torque is this. As slowly the speed is increasing and your torque is increasing and reaching the maximum point. At maximum point, it has some slip value, and after that, torque is slowly decreasing. And what will be the operating point? Operating point is somewhere here. Operating point is somewhere here. This is operating point at which the speed is n. Okay. This is your operating point. यहाँ पे your induction motor will run freely, and stable point of operation of induction motor is this. Induction motor starts from here and goes like this and comes and settle at this. This I can say this is load torque, load which is connected to the three-phase induction. You have already seen, if it is 1000 RPM, your speed is 970 RPM. At 3% of slip or 4% of slip, it will work. It is working. Okay? It will never run at. I had given one comment that induction motor always runs less than synchronous speed. You can see that this is synchronous speed. At synchronous speed, torque is 0. Torque is 0 means speed will fall. Speed will fall and your machine will not run at synchronous speed.
Because anyhow, if the induction motor speed reaches a synchronous speed, torque becomes 0 means speed will fall. Speed will fall means the machine is not at synchronous. It is always less. Okay, it will not operate in this is unstable region. Here the induction motor will not operate. Induction motor will not operate at this speed also. Induction motor will operate at this stable region. This region is stable region. This region is stable region. There the induction. Here the variation of speed is slight. Speed thoda vary hoga. The speed variation is not too much. But induction motor operates at this. So try to understand the small things of induction motor. I'm not saying read big books. Try to understand what is really happening. What is the function of S? What is this point? Why torque is directly proportional to S? I already explained in the last class. This comes from this equation. At lower speed, Sx2 square is neglected. Therefore, torque is directly proportional to S. At very low speed, S is 1. Then R2 square is neglected. Therefore, torque is inversely proportional to 1. So this is the basic characteristics of three-phase induction motor. Whenever you study machine, these characteristics will come in picture. If you study electric drives in final year, then when you control the induction motor speed control, braking, everything, then at that time you have to take care of this characteristic. This equation is very important. Torque is equal to 3 upon 2 pi ns by 60. S E2 square R2 upon R2 square plus S X2 the wholes. Right? So one thing more I like to say, this is your maximum torque. TM is maximum torque. Now I am interested in deriving the condition for maximum torque, or what is the value of maximum torque, right? Torque, where at which point your maximum torque takes place, and what is the maximum value of torque. Tm is the maximum value of torque, and this is the slip. SM is the slip corresponds to maximum torque. There is some value of slip at which the maximum torque takes place. You have to calculate, because beyond this, torque will not increase. This is the final maximum value of torque. If you want to, this maximum torque is obtained at particular value of the slip. Or what is the condition for maximum power operation? Sorry, maximum torque operation. So how will you derive the equation for maximum torque operation? Just tell me. Can anybody? Can anybody have a guess idea? How will you derive the equation for maximum torque? Anybody? Anybody having an idea how to derive the equation for maximum torque? क्या करोगे इक्वेशन को, any equation to be maximized, what is the condition for maximum? You have to differentiate it and equate to 0. तो आप differentiate किससे करोगे बताओ? Anybody? By what, which function you have to differentiate this? What is your variable? What is the variable? Here we have already seen the variable is speed or slip. In torque equation only slip term is here. So variable is slip. Slip is the only variable. So you have to differentiate torque equation with respect to slip and equate it to 0. You will get the condition for maximum torque. Just करो differentiate करने की कोशिश करो. dt by ds is equal to 0. Just differentiate करो and tell me the condition. Just differentiate this equation. Everything is constant, only slip is variable. Differentiate the torque equation with respect to S and you will get the answer. Differentiate करके मुझे quick answer बताओ, what will be the condition you are getting it?
Yes, anybody? Differentiate it with respect to s. u by v formula apply करो ना. We have already differentiated the equation with respect to r or x in maximum power transfer theorem. Just apply the u by v formula. ठीक है? This entire part is constant. E2 square is also constant. R2 is also constant. तो पूरा constant ही है. तो final E is equal to k. ठीक है? k SR2 upon R2 square plus SX2 square. ठीक है, पूरा k से लिख दिया मैंने. ओनली वेरिएबल इज s. 3/2 पाई ns 60 E2 स्क्वायर सब कांस्टेंट. नीचे प्लस है इसलिए R2 दिया. मैं R2 को भी एब्सॉर्ब कर सकता था, फिर कोई इशू नहीं. नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू s. dt by ds. जस्ट डिफरेंशिएट. किसी ने आंसर लाया क्या? जस्ट बताओ मुझे. dt by ds इज इक्वल टू, बताओ, u by v फार्मूला लगा. d by dx of u by v. v into differentiation of u minus u into differentiation of v divided by v square is equal to 0. ठीक है, तो करो डिफरेंशिएशन. v क्या है आपका? R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स, ये को हमने बाहर रख दिया, एस x2 स्क्वायर. ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ s इज 1 इंटू R2 माइनस एस R2. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस R2 का डिफरेंशिएशन 0 है. एस x2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2s x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस s x2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. तो डिनोमिनेटर पूरा 0 में चला जाएगा आपका. डिनोमिनेटर पूरा 0 में चला जाएगा. अब जस्ट यू ट्राई टू सॉल्व इट. डिनोमिनेटर विल बी 0. ये डिनोमिनेटर पूरा 0 में चल जाएगा. R2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली बचेगा क्या? R2 स्क्वायर प्लस एस x2 का होल स्क्वायर माइनस टू एस x2 स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 0. यहाँ 1s x2 स्क्वायर है, वहां 2s x2 स्क्वायर है, तो एक x2 स्क्वायर गया कैंसिल. और फाइनली यू आर गेटिंग R2 स्क्वायर इज इक्वल टू एस x2. और फाइनली यू विल गेट एस x2 इज इक्वल टू R. और यू कैन गेट स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज R2. देखो ये आ जाएगा, बहुत इजी है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप इसको डिफरेंशिएट करो s से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फार्मूला लगाओ और सॉल्व करो. देखो s स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाएगा. स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा आपको R2 by x2. स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क विल बी R2 by x2. इसकी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टॉर्क की वैल्यू, इस स्लिप की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इन दिस इक्वेशन 1. स्लिप इज इक्वल टू R2 by x2 और s x2 इज इक्वल टू R2. ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम टॉर्क. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क? You can check finally. T max is equal to, what is the value of T max? T max is equal to क्या हो जाएगा आपका 3/2 पाई ns by 60. वैसे ही रहेगा एज इट इज.
यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर की जगह R2 स्क्वायर, समझ रहे ना, SX2 की जगह R2, SX2 इज इक्वल टू R2, SX2 की जगह हमने R2 लिख दिया तो R2 स्क्वायर हो गया, SET, S की जगह क्या लिखोगे आप, S की जगह क्या लिखोगे आप, R2 बाई X2, R2 बाई X2, यहाँ E2 स्क्वायर वैसे ही रहेगा, R2 स्क्वायर, R2, तो फाइनली क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे 3/2 पाई NS बाय 60, ऊपर भी R2 स्क्वायर है, नीचे भी R2 स्क्वायर है, ये 2 R2 स्क्वायर है, और ऊपर कितना है E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय X2, तो R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली फाइनल आंसर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एज Pm is equal to 3/2 pi NS E2 square upon 2H, R2 कैंसिल हो गया। यूनिट ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज न्यूटन मीटर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ठीक है, और एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर कोई आपको न्यूमेरिकल आ रहा है, आपको इट इज आस्क्ड, इफ सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Tmax, तो Tmax is equal to 3/2 pi NS upon E2 square by 2H. So we have three formulas for torque. First formula is starting torque, second formula is running torque, and third formula is maximum. Okay. First formula T starting torque constant, second formula Tmax constant, third formula running torque, it's a function of slip. Running torque can be anything. तो वी गॉट अ 3 फार्मूलास, तो आप 3 फार्मूले को रेडी रखो, फर्स्ट फार्मूला स्टार्टिंग टॉर्क, सेकंड फार्मूला रनिंग टॉर्क, एंड थर्ड फार्मूला मैक्सिमम टॉर्क, एंड वन कंडीशन वी हैव डिराइव्ड दैट स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क और R2 is equal to SX2, SMX2 for maximum torque condition, where SM is not maximum, SM is slip corresponding to maximum torque. S is slip corresponding to maximum torque. So this is very important. R2 is equal to SMX2 is the slip corresponding to maximum torque, right? तो ये important, some important relations I had derived. इस relations पे work करोगे तो आपको कोई भी numerical solve कर सकते हो. You can solve any numerical based on this. Of course, numerical based on machines are always difficult, but your logic should be clear. If logic clear है तो आपका approach हो जाएगा, numerical solve कर सकते हो. You will face such type of numerical because one equation we have torque, starting torque equation, running torque equation, maximum torque equation, and finally condition for. Then you can take ratio also. What is the relationship between maximum torque and starting torque? What is the relationship between running torque and starting torque? This also you can do, right? Anybody having any doubt or queries, they can ask. If you have any doubt or queries on this, then you can ask. To try to solve one numerical based on this. Solving numerical is very important. तो आप इसका एक numerical solve करो. BL Thereja की book से, book is with you, all of you having a book.
आप इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इस रूम में थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम। लाइट ऑन करके लेते क्या सर आप क्लास? लाइट ऑन करके क्लास लेते? नहीं, लाइट अच्छा दिखता है लाइट ऑन करके। बोर्ड इज विजिबल ना, क्लियर? थोड़ा सा विजिबिलिटी इज पुअर बट ट्राई टू मैनेज इट। हाँ, विजिबल नहीं है सर बोर्ड क्लियर। अच्छा, इट्स नॉट विजिबल, बट आप थोड़ा सा केयरफुली देखो। यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा तो केयरफुली देख लेना, ठीक है? थोड़ी सी क्लियरिटी तो इट्स दिस बोर्ड इज नॉट क्लियर, बट अब क्या करें, ठीक है? तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ टेक डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क। Develop a relationship between starting torque and running torque. अच्छा, ओके। एक पार्ट मैंने और बताना भूल गया हूँ। ठीक है, now we have a relationship, ठीक है? We have starting torque, we have running torque, we have maximum torque, we have condition for maximum torque, we know the slip corresponding to maximum torque Sm is equal to R2 by X. This also we know. So what is the speciality in this slip corresponding to maximum torque is Sm is equal to R2 by X2. What we see that the position of maximum torque is proportional to R2. Position of maximum torque is proportional to R2. What equation Sm says? Sm is equal to R2 by X2. So position of maximum torque is proportional to position of R2. You can see that maximum torque is independent on R2. Tm is equal to 3 upon 2 pi ns by 60 E2 square by 2x2. मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ रही है, वो R2 पे डिपेंडेंट नहीं है, बट पोजीशन इज डिपेंडेंट, Sm इज डिपेंडेंट अपॉन R2 कनेक्शन, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस इफ द वैल्यू ऑफ R2 यू आर चेंजिंग, द मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन विल चेंज। अगर आप R बढ़ाओगे तो क्या होगा? स्लिप बढ़ेगा मींस इधर शिफ्ट होगा, 1 इधर है, स्लिप ज्यादा इधर है, 1 to 0 जा रहा है। तो इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R2, स्लिप विल इंक्रीज एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क विल शिफ्ट। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे R की वैल्यू बढ़ाई तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क आपका शिफ्ट है। अगर आपने R की वैल्यू कम की तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, बट मैक्सिमम टॉर्क विल रिमेन्स कांस्टेंट, R की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यू कैन से दिस इज फॉर R1, R2 डैश ले लो, ये आप इसको ले लो R2 डबल डैश एंड दिस यू कैन टेक R2 ट्रिपल डैश। I can write here R2 triple dash is greater than R2 double dash greater than R2 dash, ठीक है? तो आप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को शिफ्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा भी रहे हैं। पहले स्टार्टिंग टॉर्क कम था, धीरे धीरे बढ़े। तो रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस प्ले मेजर रोल इन चेंजिंग, शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क आपका यहां से बढ़ गया है एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क पहले यहां था, अगर R2 बढ़ाया तो इधर हो गया, अगर R2 कम किया तो, ठीक है? तो ऐसे हम कर्व्स को चेंज कर सकते हैं।
you can change the characteristics of three-phase induction motor by changing the rotor resistance. So this line is very important. When you insert extra resistance in the rotor circuit, your starting torque will improve, torque भी बढ़ेगा, and position of maximum torque will also. तो आप क्लियरली सोच सकते हो लॉजिकली कि जैसे ही हम when we insert resistance in the rotor circuit, the starting torque and maximum torque shift, and that is necessary. हमें स्टार्ट करते समय हमेशा स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए और मैक्सिमम टॉर्क भी चाहिए. रनिंग कंडीशन we don't want. Running condition is operating region this. We don't want high starting. तो ऑपरेटिंग पॉइंट हम लो रेजिस्टेंस में करते हैं and starting high resistance. So therefore there are two types of machine. One is squirrel cage machine in which rotor resistance is always constant. One is phase wound machine जिसमें 3 वाइंडिंग बाहर होती है, उसमें आप एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो. You can add some extra resistance in the rotor circuit of phase wound motor and you can improve the starting characteristics. So this is important for improving the starting characteristics of three-phase induction motor. Once the machine is started, your characteristics will be improved. If you are having any other doubt, any queries, you can ask. Okay. So this part, characteristics of three-phase induction motor, is very important. What is the effect of rotor resistance? I had already discussed. The effect of rotor resistance is changes the position of maximum torque and starting torque is increased. So today's lecture is very important, no doubt. First, we have derived the starting torque equation. When we have derived running torque equation, then we have derived the maximum torque equation. We have obtained the condition for maximum torque, and then we have also plotted the torque speed characteristics of three-phase induction motor, and we have also finally concluded that adding rotor resistance in the circuit increases the starting torque and the position of maximum torque is changed, but there is no change in the maximum torque. Maximum torque will remain as it is constant. In the next class, we will discuss more things. That's all for today. आपको कोई doubt है तो you can ask. In the meantime, I will take some attendance. किसी को कोई doubt है तो पूछ सकता है. किसी को कोई doubt है क्या? Only 30 students are present. Only 29, 28. Why all students are not present, I don't know. Okay, okay. That's all from today. Try to solve some numericals.